सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट लाइक दिस एंड देन स्टार्ट मेकिंग चेन्स। और जो चेन्स हम बनाएंगे दैट शुड बी अ नंबर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 3. You can make 3, 6, 9, 15, 30, 33 as much as you want, but that number should be a multiple of 3. And I'm going to add one more chain because पहले मैं रो करने वाली हूँ सिंगल क्रोशे की. So add one more chain. Now we have 16 chains. और जो हमारी सेकेंड चेन है उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे लाइक दिस. इसी तरह नेक्स्ट चेन में भी बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और इस तरह से बाकी सभी चेन्स में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे टिल द एंड इनटू ईच चेन. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर मेकिंग सिंगल क्रोशेज. और ये हमारी लास्ट की 2 स्टिचेस बची हैं, इसमें भी हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे इनटू ईच. And there we should have 15 stitches, that is a multiple of 3. Row 2 हम start करेंगे by making 3 chains, 1, 2 and 3. आप चाहते हो थर्ड चेन मार्क कर सकते हैं because we are going to need this afterwards. और अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे 3 together into 3 stitches. उसके लिए पहले we will wrap the yarn around our hook और फर्स्ट स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करेंगे जैसे हम डबल क्रोशे के लिए करते हैं. और अब हमारे हुक पर है 3 लूप्स. नाउ yarn over and pull through 2 loops only. और बाकी 2 लूप्स को हम ऐसे ही रहने देंगे. yarn over और अब नेक्स्ट स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करेंगे और अब हमारे हुक पर है 4 लूप्स. नाउ पुल द yarn फ्रॉम 2 लूप्स ओनली. फिर से हम सिर्फ 2 लूप्स में से ही अपना हुक पास करेंगे. नाउ वी हैव 3 लूप्स और इन 3 लूप्स को ऐसे ही रहने देंगे एंड इंसर्ट आवर हुक इनटू द थर्ड स्टिच. And now we have 5 loops. Pull the yarn from 2 loops only. और अब हमारे जो 4 loops बचे हैं इनको हम एक साथ बंद करेंगे and pull the yarn from all of them at once. And this is called double crochet 3 together. और अब बनाएंगे हम 5 chains. और फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस में इसी तरह से हम डबल क्रोशे 3 टुगेदर बनाएंगे. ये हमारी नेक्स्ट स्टिच. insert your hook and pull through 2, yarn over, insert your hook into next stitch, pull through 2, yarn over, insert your hook into next stitch and pull through 2. And now we have 4 loops left. Pull through all of them at once and this is how it looks. और फिर से 5 चेन्स बनाएंगे और इसी तरह से नेक्स्ट 3 स्टिचेस में बनाएंगे डबल क्रोशे 3 टुगेदर, 5 चेन्स और फिर नेक्स्ट स्टिच में नेक्स्ट 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे 3 टुगेदर टिल द एंड. And this is how it looks after few double crochet 3 togethers. फिर से हम 5 चेन्स बनाएंगे
और जो हमारी लास्ट 3 स्टिचेस बची हैं इसमें बनाएंगे डबल क्रोशे 3 टुगेदर। And this is our row complete and this is how it looks. थर्ड रो स्टार्ट करने के लिए पहले हम बनाएंगे एक चेन एंड टर्न योर वर्क। और ये जो हमारी पहली स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे लाइक दिस। और यहीं से हम बनाएंगे 5 चेन्स 5। और जो हमारी प्रीवियस 5 चेन्स हैं उसके सेंटर में दैट इज़ द थर्ड चेन, उसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ सिंगल क्रोशे लाइक दिस। और इसी तरह से फिर से 5 चेन्स बनाएंगे और इसकी थर्ड चेन में 1 3 इसकी थर्ड चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। अगेन मेक 5 चेन्स एंड सिंगल क्रोशे इनटू द थर्ड चेन। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। At this point it start to curls up but it's okay। और इस रो के लास्ट में इस कॉर्नर में हम बनाएंगे 2 चेन्स और जो हमारी पहली 3 टर्निंग चेन्स थी उसकी थर्ड चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। ऑन टॉप ऑफ दीज 3 टर्निंग चेन्स मेक अ डबल क्रोशे like this। now chain 3 चेन्स बनाएंगे एंड देन टर्न योर वर्क। और इस चेन 3 को हम काउंट करेंगे एज अ डबल क्रोशे। और अब इस पहली स्टिच में हम बनाएंगे 2 मोर डबल क्रोशेज। दिस इज 2 and 1 more। now we have 3 double crochets। now wrap the yarn। और जो हमारी प्रीवियस 5 चेन्स हैं उसकी थर्ड चेन में भी हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेज इनटू द सेम स्टिच। 2 and 3। लाइक दिस। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। हर 5 चेन्स की थर्ड चेन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशेज एक ही स्टिच में से। एंड इट इज़ बैक इन शेप नाउ। और जो हमारी लास्ट की 5 चेन्स है इसकी थर्ड चेन में भी हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेज। 1 2 and 3 and this is how it looks। नेक्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे बाय चेन 1 and turn your work and this row will be exactly same as row 1। इसके लिए हम हर स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे।
नेक्स्ट स्टिच में एंड कंटिन्यू टिल द एंड। और इस 3 चेन्स की टॉप चेन जो हमारी थर्ड चेन है, इस पर भी बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। एंड एट लास्ट यू शुड हैव 15 सिंगल क्रोशेज, and this is the number we have started with. नेक्स्ट रो करने के लिए चेन 3, टर्न योर वर्क, और ये रो हम करेंगे एग्जैक्टली रो 2 की तरह। पहले 3 चेन्स, फिर डबल क्रोशे 3 टुगेदर, 5 चेन्स डबल क्रोशे 3 टुगेदर। We will repeat that same row again. This is double crochet 3 together. अब हम बनाएंगे 5 चेन्स, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस में बनाएंगे डबल क्रोशे 3 टुगेदर, और इसी तरह कंटिन्यू करेंगे टिल द एंड। These double crochet 3 together comes upon the previous 3 double crochets and it creates a beautiful pattern. लास्ट स्टिच में भी हम बनाएंगे डबल क्रोशे 3 together and it again start to curl up, but it's okay. Row chain 1 and turn, and this row will be exactly same as row 3. फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 5, और प्रीवियस 5 चेन्स की थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे विद अ सिंगल क्रोशे, चेन 5, और फिर इसे ज्वाइन करेंगे विद अ सिंगल क्रोशे into the third chain of previous 5 chains, chain 5 and at last chain 2 and make a double crochet on top of 3 turning chains. Chain 3 and turn, and this row will be exactly same as row 4. फर्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 more double crochets, इन 3 turning chains का हम काउंट करेंगे एज अ डबल क्रोशे। So now we have 3 double crochets, and then we make 3 more double crochets into the center of previous 5 chains and continue. This pattern is very easy to do and it looks very beautiful, and you can make different changes every time you do this. I will show you some of my pics at the end. और इस लास्ट 5 चेन्स के सेंटर में भी हम बना लेंगे 3 डबल क्रोशेस, and this is how our pattern looks. Like I said, you can use this pattern in different ways. This sweater I made few years back when I just started crochet, because this pattern is very easy to do. In this sweater I have added few rows of double crochets in between the patterns, and it became more easier and the design looks very beautiful. And in this summer beachwear kind of top, I have increased the rows of diamond mesh stitch in between to give it a lacy look. I hope you like it. Now do it your way and enjoy.